कोरोना वायरस कोई खतरनाक वायरस नहीं है। खतरनाक वायरस तो है कॉन्स्पिरेसी का वायरस, ह्यूमन वायरस। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी कॉन्स्पिरेसी और सारी प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो इन सब की शुरुआत होती है 18 अक्टूबर फ्राइडे के दिन 2019 होटल पियर USA न्यूयॉर्क, जहाँ सारी षड्यंत्र को रचा गया था और उस मीटिंग को नाम दिया गया था इवेंट 201 अ ग्लोबल पेंडेमिक एक्सरसाइज, जिसको आयोजित किया था जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी USA, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और भी बहुत लोग शामिल थे। इसके अलावा 150 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे, जिसमें से भारत के मुल्क के भी लोग वहाँ थे। इस इवेंट में कहा गया था कि इमेजिन कीजिए कि कोई वायरस आ जाता है, दुनिया में वो हाहाकार मचा देता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा। उसका नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस। और उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट को जरा एक बार देख। Here in New York and online, welcome to Event 201. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. At first, the spread was limited to those with close contacts, healthcare personnel, co-workers, and families. But now it's spreading rapidly throughout local communities. International travel has turned local epidemics into a pandemic spanning the globe. Just 3 months ago, CAPS started in South America, but has now reached several countries with more than 30,000 cases and nearly 2,000 deaths. CAPS is a novel coronavirus related to those viruses that caused the frightening SARS epidemic in 2003 and the deadly MERS outbreaks in recent years. Scientists think each infected person in turn infects on average 2 more people. This is a serious respiratory disease. More than half of the recognized cases have required hospital care, creating a huge strain on healthcare systems. The fatality rate is about 10%. For comparison, CAPS is about as lethal as SARS and 2 to 4 times more lethal than the 1918 influenza pandemic, the worst pandemic on record. Even so, some people only exhibit mild flu-like symptoms, not requiring treatment in a hospital. Alarmingly, those people are able to walk around and spread the virus, not realizing they are doing so. Even worse, international travelers have been arriving at their destinations symptom-free, but within a matter of hours, becoming ill. In other places, physicians have quickly recognized the symptoms of CAPS and have been able to isolate infected individuals and avoid an outbreak, for now. Global public health experts are very concerned about this disease because it appears the virus is readily transmitted through the air from person to person. Essentially, all people are susceptible. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. Models developed by leading public health authorities indicate a CAPS pandemic could lead to an outcome worse than the 1918 influenza, which killed 50 to 100 million people worldwide. Given the global population is 4 times larger than it was in 1918, if these models prove accurate, we could be looking at hundreds of millions of deaths over the next year or 2. While I agree Extranavir does look promising, it's currently used for treating HIV. However, it's not manufactured on the scale needed for treating this many people. And will we just stop using it for HIV treatment? How will we get this drug in the... तो इस वीडियो में वो सारी बात बोली जा रही है जो कि अब के प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जो आज हो रहा है। सारा प्लान 5 भाग में बांटा गया था। वायरस का इंट्रोडक्शन, कौन सा वायरस आएगा, मीडिया क्या दिखाएगी, ट्रैवलिंग कैसे इफेक्ट होगी, पेशेंट कितने मरेंगे, कितने लोगों को क्वारंटीन करना है, और ये सारा षड्यंत्र कितने दिन तक चलेगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा। मतलब वायरस जो 2 महीने बाद आने वाला था, उसका सारा डेटा इनको पहले से ही पता था। तो अब 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये लोग भगवान के दूत हैं, इनको सब चीज़ पहले से पता चल जाती है, या तो ये चीज़ पहले से ही फिक्स थी। जाहिर सी बात है पॉइंट नंबर 2 ही सही होगा,
और इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। और बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। Pandemic. Twitter and Facebook are reporting they've identified and deleted a disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation about the outbreak. For more on this, we go to our correspondent, Catalina Parks. Chen, these accounts were created by several state-sponsored groups intending to sow political discord, and some individuals are seemingly seeking to gain financial advantages. Violence against healthcare workers and minority populations has been increasing. A recent riot highlights the real danger in these posts. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Thank you, Catalina. For more on this, we are joined by experts on crisis communications and social media, Kevin McAleese and Sarah Lee. To me, it is clear countries need to make strong efforts to manage both mis- and disinformation. We know social media companies are working around the clock to combat these disinformation campaigns. The task of identifying every bad actor is immense. And experts agree that new disinformation campaigns are being generated every day. This is a huge problem that's going to keep us from ending the pandemic and might even lead to the fall of governments, as we saw in the Arab Spring. If the solution means controlling and reducing access to information, I think it's the right choice. I agree with Kevin. This is a big problem and doesn't even account for the massive amounts of misinformation being generated by legitimate users about the pandemic. But it's not just trolls who are spreading the fake news. It's often political leaders themselves. Who's to judge what's real or not? Would we trust every government to separate truth from lies? I think this is more than just keeping the bad information out. It's also about making sure real public health information reaches the public. News is found from outlets other than social media. News organizations, public health groups, and companies need to help people take the right actions to protect themselves by promoting accurate, real information. जाहिर सी बात है कि अब ये सब एक संयोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सब प्री प्लान्ड था, फिक्स था और बाकायदा इसकी पूरी रिहर्सल की गई थी बिल गेट्स द्वारा। बिल गेट एक ऐसा खतरनाक आदमी है जिसने पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने का ठेका ले रखा है। अपने पैसों के दम पर ये सबको वैक्सीन लगाना चाहता है और आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। इसके लिए ये वैक्सीन कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन देता है, फंड देता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी व्यापार होता है इनका परोपकार के पीछे छुपा हुआ। मकसद इसका यह है कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल वैक्सीन आईडी बनाना चाहता है। हर आदमी को ग्लोबल वैक्सीन आईडी के लिंक कर दिया जाएगा आधार कार्ड के तौर पे। और इस बार वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं बल्कि एक चिप के फॉर्म में आएगी ताकि हर आदमी का डाटा उन तक पहुंच सके और आपको हर फैसिलिटी उसी आईडी के रूप में मिलेगी, उसी आईडी से मिलेगी। यानी पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रैवल करने के लिए, एडमिशन के लिए वो वैक्सीन कंपलसरी कर दी जाएगी। और उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़, कैंसर, इनफर्टिलिटी और सीवियर कंडीशन में डेथ तक भी हो सकती है। बिल गेट्स ने भारत में 1 से 2 मिलियन डॉलर यानी कि 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए डोनेट किए थे NTAGI में, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, और पूरे भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने 5 से कम उम्र के बच्चों की पोलियो की खुराक 5 से बढ़ाकर 50 कर दी थी। और जिसका भयानक नतीजा ये निकला कि 4,80,000 बच्चे AFP यानी कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का शिकार हो गए थे उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के चलते। और 2009 में इन्होंने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगाई थी, जिसके साइड इफ़ेक्ट के चलते तकरीबन 8,000 बच्चियों की जान चली गई थी और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़े थे। तो अब बिल गेट्स ये दोबारा करना चाहता है। 2017 में तो सरकार ने इसे बाहर कर दिया था, लेकिन अब पैसों के दम पर दोबारा वापस आना चाहता है। इस बार नाम है कोरोना वायरस का। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या किया जाए। तो रास्ता सिर्फ एक ही है, तरीका सिर्फ एक ही है कि भारत की स्वदेशी चिकित्सा को अपनाया जाए, आयुर्वेद को अपनाया जाए और इन डॉक्टर ड्रग्स का बहिष्कार किया जाए ताकि दोबारा कोई षड्यंत्र में ना फंसे और किसी की हेल्थ पे बात ना आ पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।